Good afternoon, friends. Welcome to Mr. Magical Pathway Publication YouTube channel. Uh, Perhaps you are doing very well for the coming examination on 20th, that is PASA examination. In this video, we will discuss some questions on Volume 6 Part 1. This is meant for PASA. Even other person can view it, because some of the subjects are very related to each other. So very quickly we will do this video. Thereafter I will upload another video on volume 6 part 3. So question number 1. As per rule 3 of volume 6 part 1, departmental post office is divided into how many departments? Post office is divided into how many departments for the purpose of distribution of work? कौन कौन सा डिपार्टमेंट अंदर में है? जैसे मेल डिपार्टमेंट, डिलीवर डिपार्टमेंट. द आंसर इज 10 डिपार्टमेंट्स. मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वर्क. मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वर्क is maintained in which form? Form number MS11. Who is the competent authority to issue memorandum of distribution of work of post offices? The answer is divisional superintendent. Please remember this. Another important question. A nominal role may be maintained for postman and village postman in offices whose staff strength is more than how many numbers? इसका मतलब जिस ऑफिस में पोस्टमैन एमटीएस का स्टाफ ज़्यादा है, कितना नंबर होने का बाद इसमें एक सेपरेट नॉमिनल रोल मेंटेन किया जाएगा. व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ पोस्टमैन एंड विलेज पोस्टमैन इज मोर देन 25 इन ए ऑफिस, ए सेपरेट नॉमिनल रोल विल बी मेंटेन्ड. प्लीज रिमेंबर दिस. व्हाट इज द नॉमिनल रोल इज मेंटेन्ड इन व्हिच फॉर्म? फॉर्म नंबर ऑफ नॉमिनल रोल ये आता है कभी कभी MS12. MS12 is the nominal roll form. Nominal roll is maintained in form number MS12. Who issue the memorandum of distribution of work in respect of first class state post offices? पहले हमने बोला था कि आपका पोस्ट ऑफिस का जितना है डिविजनल सुपरवाइज करेंगे, लेकिन जहाँ पर गेजेटेड पोस्टमास्टर होता है जैसे जीपीओ का, द पोस्टमास्टर हिमसेल्फ विल इशू द मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इन रेस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट क्लास हेड ऑफिसेस. वही तो प्रॉब्लम होता है थोड़ा थोड़ा. अटेंडेंस रजिस्टर इन फॉर्म नंबर S37 विल बी मेंटेन्ड बाय in which offices? Attendance register is maintained in form number S37. It will be maintained in every post office having more than one official. एक से ज़्यादा होने से आपका अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा. सिंपल थिंग्स अभी तो पोस्ट ऑफिस में कुछ कुछ में होता है, जैसे कोई डबल हैंड पोस्ट ऑफिस, इसमें अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन होगा. As per Rule 17 of Volume 6 Part 1, the restriction on information inspection of documents are not applicable to which officers? कोई इंस्पेक्शन के लिए, डॉक्यूमेंट लेने के लिए, पेरूजल के लिए आया है, ये जो रूल है आपका कौन सा रैंक ऑफिसर होने से इट इज़ नॉट एप्लीकेबल? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशंस जज, कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसपी, डीएसपी, इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर्स. All these officers will be permitted to inspect the document of post offices on requisition. इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एसपी, डीएसपी
इंस्पेक्टर रैंक आपका इसमें जो बुक में है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन, कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसपी, डीएसपी, इनकम टैक्स ऑफिसर्स, एक्साइज ऑफिसर्स, they are permitted for taking information and inspecting the document of the post offices. Special oblong stamp is supplied by whom with distinct indication for exclusive use in various branches of post office. Means who issue the special oblong stamp, who is the authority, give permission, that is head of the circle. As per Rule 23, Volume 6, Part 1, larger head offices are supplied two iron safes. One is used for dash, for what purpose, and other is for daily transaction. दो सेफ होता है बिगर ऑफिस में, एक आयरन सेफ जो यूज किया जाएगा डेली ट्रांजैक्शन के लिए, देन अदर सेफ जो है वो किसके लिए यूज होगा, अदर सेफ विल बी मीन्ट फॉर रिजर्व सेफ. सो वन इज रिजर्व सेफ, अनदर इज डेली ट्रांजैक्शन सेफ. ऐसे एफई सेफ, ट्रेजरी सेफ, रिजर्व सेफ, these are the things. So one is reserve safe, another is daily transaction safe. इसको थोड़ा सा याद रखिए, कोई डाल सकता है. हेड ऑफ द सर्कल सर्कुलर्स आर ऑर्डिनरी इशूड बाय हेड ऑफ द सर्कल्स वंस इन ए. जो हेड ऑफ द सर्कल का सर्कुलर होता है उनका पीरियडिसिटी जो इशू होता है उनका पीरियडिसिटी क्या है, 1 month. Preservation of period of a postmaster order book and stock book of post office is dash and dash. One thing be clear, postmaster order book is the order book where daily orders are written by the postmaster. There is another order book where we keep the IR, VR, CTC. Here the postmaster order book preservation period is 3 years. पोस्ट ऑफिस स्टॉक बुक जो है उसका प्रिजर्वेशन पीरियड इज 10 years. प्रिजर्वेशन ऑफ पीरियड्स के लिए कभी कभी एक क्वेश्चन डाल देते हैं. अंडर प्रोविजन ऑफ रूल 26, द पोस्टमास्टर एंड ईच असिस्टेंट एम्प्लॉयड इन ए पोस्ट ऑफिस must keep a receipt book in form number. Postmaster and each assistant employed in a post office must keep a receipt book. Then what is the book number? MS8, MS5, MS3, MS7. Answer is MS7. This is a new question. Postmaster and each assistant employed in a post office must keep a receipt book in form number MS7. Cashback must be always be packed and closed and sealed by whom personally? By treasurer. In presence of whom? In presence of sub-account PA. So cashback must always be packed, closed and sealed by the treasurer personally in presence of sub-account PA and weighed by the latter. Means sub-account PA will weigh it without any help from any other official respectively. Cashback must always be packed and sealed by treasurer in places of sub-account PA. When remittance is sent by post, the sealed cashback should be made over to which assistant under receipt? Sealed cashback हो गया, that will be made over for dispatch. So the treasurer will give the sealed cashback after taking signature in the
treasurer's cash book of which PA. Means treasurer after taking the signature of which PO, which PA will made over the sealed cash bag for dispatch inside registered bag. The answer is registered assistant, registered PA. So the sealed cash bag will be made over by the treasurer. The signature of the registration assistant will be taken in the treasury cash book. Then the sealed cash bag will be made over to the registration PA. That sealed cash bag will be dispatched through the registered bag. इसमें 4 क्वेश्चन आपका हो गया. हमारे बुक में ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं डालते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चन होता है. Those who have taken the books, you can see some answer in the question itself. That is the speciality of the book that has been developed. Which type of post office issued identification card by whom? पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड है. Which type of post office issue it? Head post offices will issue it, and postmaster of a HO issue the identification card, and the cost is ₹9. You know this perhaps. In case of loss of original identification card, it should be verified by whom in his circular, simultaneously reported by which mode to other circle. एक ट्रैवलर्स को हमने आइडेंटिफिकेशन कार्ड HO इशू किया है, ये लॉस हो गया. Who will verify it? It will be verified as the head of the circle. Remember this. Then this fact should be reported to other circle by express letter. किसी का आइडेंटिफिकेशन कार्ड गुम हो गया, ये आपका ये जो गुम हुआ है ना नहीं हुआ है, इसको वेरिफिकेशन हेड ऑफ द सर्कल करेंगे. फिर दूसरा सर्कल को बाय द वे ऑफ वन एक्सप्रेस लेटर वो इंटीमेशन कर देंगे जो इस आदमी का आइडेंटिफिकेशन कार्ड गुम हो गया है. ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है. If insufficiently paid VP article is found in a letter box, what should be done? What should be done? Find the what should be done? It may be returned to him and receipt to be taken in the postman book. This is correct. If the name and address of the sender are not there, it may be returned to him through RLO. In no case the amount of postage and registration fee previously paid will be refunded. इसका मतलब आपका क्या करना है? It may be returned to him and receipt to be taken in the postman book. नेम एंड एड्रेस नहीं, सेंडर का इसमें नहीं है, तो इसको भी सेंडर को दिया जाएगा, बट बाई थ्रू RLO. इन नो केस पोस्टेज स्टैम्प विल बी रिफंडेड टू द सेंडर. विलेज पोस्टमैन बुक इज मेंटेन्ड इन व्हिच फॉर्म? ये कभी कभी डाल देते हैं. विलेज पोस्टमैन बुक इज मेंटेन्ड इन व्हिच? विलेज पोस्टमैन बुक MS 86. इसको याद रखिए. Article received missent are to be treated as article received in which section? Article received missent are to be treated as articles received in deposit, redirect,
delivery sorting. Article received in sent are to be treated as article received in sorting. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, लेकिन आर्टिकल रिसीव्ड मिशन आर टू बी ट्रीटेड एज आर्टिकल रिसीव्ड इन sorting. Please remember this aspect. Stamp and stationery found unfit for use due to faulty manufacture should be collected by the postmaster, and those may be directly returned to the controller of Central Stamp Store, Nasik Road, once in which period for exchange. जितना डिफेक्टिव स्टैम्प यूज नहीं हो पाएगा, जो अनफिट है, जो पोस्टमास्टर एचओ का वो इशू को भेजेगा, दे विल रिटर्न इट टू द सर्कल स्टैम्प डिपो नासिक रोड. नासिक रोड को सीएसडी नासिक को भेजेंगे. ये जो पीरियोडिसिटी होता है, कितना कितना टाइम के अंदर में उसको सेंड करना है. द पोस्टमास्टर विल रिटर्न द अनफिट एंड स्टैम्प्स दोज आर फॉल्टी फॉर यूज क्वार्टरली टू पीएसडी to CSD Nasik. Stamp and stationery found unfit for issue due to faulty manufacture should be collected by the postmaster, and those may be directly returned to the controller of Central Stamp Depot Nasik quarterly for exchange. जितना जाएगा फिर वही अमाउंट का अच्छा वाला स्टैम्प आएगा. Complaint and suggestion book will be kept by all post offices. Then this book is maintained in which form number? MS 94. Book of information is maintained by postmaster and sub postmaster in form number MS 104. In form number MS 104, and it should be kept up to date, and inspecting officer to examine it to see if which aspect is improving, to see if the traffic aspect is improving. ऑफिस का ट्रैफिक कितना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, वो बुक ऑफ इंफॉर्मेशन में जो इंफॉर्मेशन रहेगा MS 84 में, दे विल एग्जामिन अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक ऑफ द पोस्ट ऑफिस. Who is responsible for correct writing the service book of departmental staff for postmaster verification? Who is responsible for correct writing in the service book for postmaster verification? Bill clerk, establishment PA, accounts PA. Answer is accountant. Accountant of HO is responsible for correct writing of service book. Postmaster order book is maintained in form number MS 1. Beat instruction register is prepared in form number which? MS 32. पोस्ट ऑफिस गाइड, पोस्ट ऑफिस वॉल्यूम 6 पार्ट 1 से फॉर्म नंबर से एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है. सो इसको थोड़ा सा याद रखिए. Which mail list form will be used when mail is carried by the contractor? When mail is carried by the contractor, mail list will be used in which form? Form number AM1. Form number AM1 is used as mail list when mail is carried by a contractor. Which list is required to be referred when parcel and packet bags are to be sent loose and when they are to be enclosed in transit bags? When the parcel and packets bag will be sent loose, which list will be consulted? Mail list, mail abstract, due mail sorting list,
sorting list. Answer is sorting list. Answer is sorting list may be consulted when parcel and packet bags are to be sent loose. When postage is taxed under rule number 115, such item to be noted by whom in the error book, that is form number MS2, against the name of the office of posting. इसको ध्यान से सुनिए. When postage is taxed under rule number 115, such items to be noted by whom in the error book. When postage is to be taxed, the delivery assistant will write it in the error book. Error book is MS2. What is the periodicity of detention of a parcel in delivery post office from the first attempt receipt of article at post office? वो पार्सल जब आएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, वो कितने दिन तक पोस्ट ऑफिस में रहेगा? द आंसर इज 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट. ऑन द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पार्सल, if it is seen that the address is deceased, such article will be treated as which type of article? जो पार्सल आया, देखा गया जे वो जो एड्रेस है वो नहीं है, वो चल बसा है, उसको वही आर्टिकल को हम कौन सा आर्टिकल ट्रीट करेंगे? रिफ्यूज सेकेंड अटेम्प्ट होगा, RL को सेंड कर देंगे. अनक्लेम्ड ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पार्सल, इफ इट इज सीन दैट द एड्रेस इज डिसीज्ड, सच आर्टिकल टू बी ट्रीटेड एज अनक्लेम्ड. इसको अनक्लेम्ड आर्टिकल ट्रीट किया जाएगा. In first class head offices, postmaster should maintain register of complaints in form number CPT1. Please remember this. डिपार्टमेंटल स्टैम्प वेंडर होता है, उनको कैसे स्टैम्प दिया जाता है? ए डिपार्टमेंटल स्टैम्प वेंडर may and have the advance of postage stamp which is equal to his daily sale up to limit which should not exceed which times of his security. वो एक सिक्योरिटी बॉन्ड जो दिया होगा, उनका जो ऑथराइज बैलेंस होगा स्टैम्प सेल करने के लिए, सो इट शुड नॉट एक्सीड 3 times ऑफ इट सिक्योरिटी. वो 1000 रुपये का दिया है सिक्योरिटी बॉन्ड, उनका 3000 तक आपका स्टैम्प वेंडर के पास रहेगा. एज पर रूल 32 पब्लिक 4, द force letters and green envelope should not be taxed at the time of delivery if it bears the day stamp of army post office. Such letters are equivalent to which category? फोर्स लेटर है ये ग्रीन एनवलप में जाता है, इसमें स्टैम्प ऑफ आर्मी पोस्ट ऑफिस का है. वो जो आर्टिकल कौन सा कैटेगरी का आर्टिकल होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इट इज इक्विवेलेंट टू इंग्लैंड लेटर कार्ड्स. इट इज इक्विवेलेंट टू इंग्लैंड लेटर कार्ड्स. Mail list should be prepared by whom? Mail list should be prepared by mail assistant. It should be prepared in duplicate by means of a कार्बनिक प्रोसेस. आपका वॉल्यूम 6 पार्ट 1 में बहुत कम को 1-2 क्वेश्चन आता है. सो इन दिस वीडियो वी जस्ट डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑन वॉल्यूम 6 पार्ट 1. प्लीज go thoroughly. I am happy that some aspirants they are viewing the video, but here I will make you a request. If you are viewing the video,
please give the BJ, please give one comment from where you are viewing, because some of the books has gone to outside also. So since the examination is very nearer, I will upload some more videos. Please view the video and have a good day. प्लीज़ डू नॉट टेक एनी टेंशन. एक कंसेप्ट आपको याद रखना है एग्ज़ाम के लिए, सभी के लिए, इवन इन पर्सनल लाइफ. दो चीज़ें, कैन आई, इसमें एक क्वेश्चन मार्क है, अनदर इज आई कैन. सो सिंपली यू कीप पेशेंस, बी कॉन्फिडेंट, आई कैन, मतलब यू कैन succeed in the examination. Best wishes. Thank you for viewing the video. Please like, subscribe and share the channel with your friends. Thank you very much. Have a good day.